Basically, the subject, the title is the myths of Indian traditional diet. It gives various meanings. Okay, what do you mean by myths of that? Why there is a myths of a traditional diet? Basically, going on this subject on a very wider way, I would like to give my little introduction. Basically, I have been in this field for almost 35 years, and 25 years I was associated with the pharmaceutical industry. And with that, the few things which I noticed, despite of the best medicine available in India and throughout the countries abroad, we are not finding a solution even for the acidity. This is a basic concept. If you just look into 1947, the Indian pharmaceutical industry was around 10 crore rupees. By 2010, it has crossed more than 80,000 crores of rupees. This is the turnover of Indian pharmaceutical industry. If you just look at the hospital point of view, if there was a one hospital, there are mushroomed like 100 hospitals. One medical shop has gone into 25 medical shops in the same land. Similarly, there are the graduates in allopath, homeopath, Ayurveda. With the post-graduation, the total numbers of doctors are increasing every year by 50,000. Now, if this is the data, then why we are not finding a solution even for the acidity? Forget the cardiac problems, diabetes, cancer, we can't just take into the consideration. On the contrary, in every conferences, if you just look at in the bigger first line of a paper, we say by 2025, India is going to be the diabetic capital of the world. The highest cardiovascular problems is in India. Then why this human resources are wasted? I not counted the people who are doing B.Pharm, M.Pharm, PhD. Now, if you got some other problem, forget about the human body. If you got a mobile, you got some little problem, you can go to the shop wala who is not educated, but within 10 minutes, he will correct it. And for the same reason, you need not to visit again for the same shop, that person, for the same problem. But when it comes to the human body, we are constantly visiting for the same problem, either the same doctor or the different doctors. Why this is? So one incident has happened with me also, and that has turned my total life towards a diet and nutrition. From last almost 13 years, I am practicing in a diet and nutrition. And there I found some of the lacuna in Indian traditional diet. So the example I wanted to put you, my father had arthritis. And similarly, since we were in pharma industry, we used to go to our various doctors taking him, कि इसका कुछ इलाज है तो करो. So we did everything, but ultimately there was no cure, as it is said in India कि इसका कुछ इलाज नहीं है और आपको कुछ नहीं मिलेगा. He died in 2000, and there has my total perception has changed. There has to be some reason for that. If you all people are coming over here all the way to listen this lecture, there's a reason, because you wanted to listen something. So for that also there has to be some reason for that. So I found in some literature, if you go to Southeast Asia, like China, Japan, you won't find arthritis, you won't find osteoarthritis. उनके डिक्शनरी में नहीं है कि किसी को पैर का दर्द है. But if you just look at the Indian, at any home, ऐसे कोई घर नहीं होगा जिसके यहाँ आर्थराइटिस किसी को, मदर को, किसी फादर को या सिस्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. एज ओल्ड में होता है. सो व्हाई दिस इज सो? एटमॉस्फेयर इज द सेम, human body is same, blood group is same. There are certain changes, but then I try to focus on the
some of the foods which they are taking and what Indian people are taking. So I found something is missing in their food. So first criteria I found, they are not taking milk and milk products. But in India, it is a very rich in Indian food. So that I have taken that molecule in the context of a pharmaceutical molecule. Just I started going back into the depth. I found that milk is one of the causative factor for the osteoporosis. But in India, we say milk gives a calcium. That prevents osteoporosis. Then my question comes, India is the largest producer of milk and milk products. The number one in the world. And the highest osteoporotic patients are in India. So why this is so? So these are some of the things I would like to go in a very detail. So there are the 5 constitution which I found, 5 foods. So number 1 is milk and milk products. So dear friends, before I go into the details, I would like to hear from all of you what you feel about the milk and milk products. Actually, what you say is partly true because it contains the growth injections. Okay. Even in it comes from the dairy. Dairy, yeah. It's oxytocin you're talking. Yeah, right. Very good. Right. Second is lactose. Very good. Lactose. So, and which is intolerance and all this thing. Yeah. Right. But if we see really, I mean, from Rishi time and all these things. Yeah. I mean, the milk in the India is continued, and at that time there was no that harm, or it was not highlighted. Okay. Very good. So is it really only milk product or some other constitution like mobilization, like active life and all these things? Very good. Very good. Really ideal. Okay. What's the good name, sir, by the way? Shirish Shirish Mungre. You are from which field, by the way? I'm Mechanical engineer. Okay. So nice of you, Mr. Shirish. This is one of the opinion of your colleague, and we agree with this. Yes, sir. Another mechanical engineer. Yeah. My name is Gul Punjabi. I'm Karachi born. Very good. Now in Sindh we had a habit that even you have had full dinner, Yeah. nutritious, sumptuous, Yeah. but everybody was woken up by the mother Yeah. from sleep at bedtime and given a glass of hot What heart milk? Yeah. and obviously it has no problems. But my personal impression is that milk is not good for those who have mucus problems. Okay. And producing. Okay. And when you have bad cold and all that, you should avoid milk. That's my impression, right or wrong. Okay. And I try to minimize milk intake in my tea and coffee, and I try to take that British tea with a little milk. Very good. What's the good name, sir? Gul Punjabi. Mr. Gul Punjabi. Gul Punjabi. But I do have These problems. Okay. another problem. Now, every person has got their own studies and on this. Let us see the common factor of a science. What? Dr. One footnote. Yeah. The milk which I am referring to Yeah. was always cow's milk. Okay, no problem. Always. Yeah. It was never the buffalo milk. Okay. So let us take this subject with a common angle with the help of science. What science says? Pardon? It's a balanced diet. Yeah, it's a balanced diet. All the doctors are advising to take milk or milk. But that is not science, that is a Yeah, belief. that is a belief. What is? All Nee. nutrients are present. Yeah. What this doctor said is absolutely right. Nothing is wrong there. Calcium content in milk. Yeah, it's everything is there. So this what you said is correct. It is had got a complete food. It has got a complete minerals, calcium, everything it has got. Purna Ahar is a complete food. So there is one sentence is missing in our books. That is, the milk is a species specific. Cow is milk for their calf. And our mother is milk for our baby. This is one, एक छोटा सा जो word है कहीं तो भी missing है. अगर ये शायद किसी ने पहले लिखा होता तो आज जो confusion है शायद नहीं होता. So to understand this, we have to take the 3 points in consideration. One is nature, second anatomy physiology of a cow and their functions, anatomy physiology of the human body,
and their functions, and the scientific reviews which are published throughout the world in scientific manner. So if you put all the three things in a one platform, the outcome of that compels us to rethink, yes, we are somewhere wrong. So dear friends, I would like to ask you everyone, can we go against nature? Not definitely. Suppose if we go against nature, what happens? We have to take the reactions on our human body. So whatever the animals or got the birth on this earth, they are well categorized with the science. Reptiles, non-reptiles, vertebra, non-vertebra. They are the some which having a breast. So they are considered as a mammal. And science says there are around 4,700 mammals on this earth. 4,700 mammals. हम लोग hardly we see few. गाय, भैंस, बकरी जो generally देखे, but there are 4,700. So here the two questions comes in a common way. Ki, have you seen any, two questions. First question, have you seen any mammal on this earth taking a milk of another mammal? कहीं देखा अपन ने कि कोई स्तनधारी दूसरे स्तनधारी का दूध पीते हुए कोई पाया जाता है क्या? Nobody, except human being. This is against nature. Very simple logic. The second question comes, have you seen any mammals on this earth taking a milk of another mammal throughout their life? No, except human being. They are the only human on this earth taking the milk of another mammal till they exist from this earth. अर्थी उठने के पहले भी बुलाया जाता है कि it's a good thing for it, you should take it. So this is against nature. Nature never allows this thing. Now the very important factor here is something missing. What is the concept of a milk? Concept of a milk is very simple. When the bachu is born, that time the intestine is not mature. The bachu cannot digest the solid food like an adult. But at the same time, that bachu requires a nutritional supplement for the growing purposes. So God has gifted that food in a liquid form from the respective mother. After the consumption of 6 months, intestine gets mature, and then we switch over to semi-solid food. And thoda sa bada ho gaya, so then we switch over to solid food. And similarly, that time only, the milk vanishes from the mother's body because the requirement is completed. यदि इसके बाद इंसान को दूध की ज़रूरत होती तो आप जितने लोग यहाँ पे इंक्लूडिंग माई सेल्फ, वी वुड हैव गॉट द मिल्क एट दिस एज फ्रॉम आवर मदर्स. यहाँ पे ये सब्जेक्ट पूरा क्लोज हो जाता है कि ह्यूमन इज नॉट रिक्वायर्ड फर्दर मोर आफ्टर इट्स गेट्स एडोलेसेंट. आप थोड़ा बड़ा उसके बाद में ज़रूरत नहीं है. So now what the science says, we have to see the scientific point of view. The 5 things are very common, is known to everyone. The protein, carbohydrate, fat, vitamins, minerals, these are known to everyone. Complete food के हिसाब से सबको मालूम है. But nobody has gone into detail of that. What do you mean by protein? What do you mean by fat? The carbohydrate. As you rightly said, the carbohydrate, which is the lactose intolerance. So now we will go with the help of there's calculations in the percentage wise. Now first we take the protein subject. The protein which is found in the cow milk is, it is known as a casein. Okay, and to break this into the smaller peptide, it requires special enzymes known as ranine, which is found only in the 4th chamber of a cow. It is missing in the human body. So under these circumstances, this cannot be digested. Second, the percentage of the protein in the cow milk is around 3.2%.
and human milk has got 1.1 or 1.2%. This is a basic factor, and the amount of casein is found in the cow milk is 80% of a 3.2. 80% of 3.2, while in the mother milk it is only 0.2% of a 1.1. 0.2 of 1. Yeah, 0.2% of a 1.1, and there is 80% of 3.2. So this is a bigger difference which has got in the protein. And second is a carbohydrate. It is lactose. So in the cow milk it is only 4%, but the human milk it is a 7.2%, because the bachu who is there, bachu requires the energy for the brain development. It is derived from the lactose. So after the birth, next 3 years, the brain keeps on developing, and 70% growth is already there in the fetus. After getting the birth, that 30% is basically after birth it keeps on increasing. The brain is, and that requires energy from the lactose, and that is why it is 7.2%. And thereafter there is one special enzyme known as a lactase, which requires for the further in the lower to break down that. It vanishes from our human body by the age of 2 or 3, and thereafter it's very difficult to digest this lactose by the human body, and that gets precipitated in a different form, which causing a belching, which causing a constipation, which is a we call it as galactosemia. आपकी आँख उससे ख़राब होती है, यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं which is causing a human defects. It is a lactose. The very important factor of fat. पहले ज़माने में कहते कि घी अच्छा था, साइंस अभी भी प्रूव करता है कि घी अच्छा था, अच्छा है, अच्छा रहेगा, because it's a butyric acid which is alkaline in nature, and इसके लिए our human body accept that ghee or the fresh butter, because the composition is the same of a human mother milk fat and the cow fat. जब जनरली आज के दिनों में उसको हमने काफ़ी अपोजिट में बात करते हैं कि घी नहीं लेना चाहिए, but that's basically is wrong. One should have that. It's the best. Even if you put the 100 years, it will never get disturbed. It will be remain as a same molecule. Then similarly, these are the 3 basic molecules, and then is coming a sodium, potassium, magnesium, calcium, all these things. So these things are 3 times more in the cow milk. यहाँ तो भी बच्चा छोटा है, वो अपना खुद का खाना नहीं पचा पा रहा है. So right from first day, the kidney starts getting the load on the very first day, और पहले दिन से किडनी डैमेज होना चालू हो रही है हमारे बच्चे की, because kidney has got his own threshold to make a electrolyte balance. So right from first day हम लोग basically putting a threshold at. Now this is a scientific parameters. Now second very important factor, the process of a drinking of a milk is a suckling process. In medical terminology it says a neuroendocrine reflexes. आपने देखा होगा अगर कभी डिलीवरी होती है तो the mother is in one room, another room is बच्चा is crying, child. See, the lactation starts. It's a neuroendocrine reflexes. But what we do in the cow milk, against the will of cow, just keep on stretching that. अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ की तो पैर बांध दिए उसके और खींच ले आते हैं. अब since it is not made for the human being, within a half an hour you will find that milk gets spoiled, जिसको हम बोलते फट गया. But person, the old days people have applied their mind and put the temperature below that, and they found is milk is फटना बंद हो गया. Why? Because the one
drop of a milk has gone 20 lakhs live bacteria in that, which keeps on multiplying. So milk becomes acidic and वो आपका फट जाता है. But when you give the temperature, all microbacteria gets the what you call it is the production is taken back for that, and but we are not derived the dead bodies of that. आपके जितनी बैक्टीरिया आपके डेड हो गए, आपने डेड हो गए, लेकिन उसकी बैक्टीरिया की अपन वी कैन नॉट विड्रॉ दैट. And every bacteria has the specific cell wall is known as a protein, or when any new protein enters into the human body, that is considered as an antigen and antibodies are produced. So सबसे पहले जब दूध हमारे बच्चों के या हमारे शरीर में जाता है, so this reduces the immunity of the human body, and then second complication starts if the immunity is reduced. This is the first. Second, the practical point of view से the calcium part which is very important. If you go to any घर में किसी भी आप जाएं, तो अगर हम लोग पढ़े लिखे नहीं भी हैं, काम वाली भी जो होती है घर की, दूध की बात करें, it is connected with the calcium factor, nothing else. They will never ask सोडियम कहाँ से मिलेगा, मैग्नीशियम कहाँ से मिलेगा, बोरान कहाँ से, नहीं. कैल्शियम फैक्टर इज फिक्स्ड इन देयर माइंड कि फ्रॉम कहाँ से मिलेगा ये. सो उसके लिए एक साइंटिफिक मेथड एवोल्यूशन की ऐसी है कि जैसा एज आई सेड, मिल्क नेवर गिव्स द कैल्शियम, इट एक्सक्रीट द कैल्शियम from the human body, and that causes the osteoporosis. And probably I am the first man in India talking in a scientific manner in a medical college. This is where we are wrong. Yes, it causes osteoporosis. The reason, let us understand from the point of biochemistry. What happens when the milk enters into the human body? It has got the two basic amino acids known as the cysteine and methionine, and the sulfur group. So when this enters into the body, this gets converted into sulfuric acid. And as you know, the human body is working on the two basic principles of the blood pH 7.4 alkaline and the body temperature 37 degrees centigrade. These are the only two basics why our body is alive, we are all alive. So 7.4 pH is alkaline pH, where all body activity keep on doing all biochemistry reactions. So when it enters into the body and gets converted to sulfuric acid, the body blood pH keeps on dropping towards the acidic side. And if the pH is below 4 or 3, our body will get collapse. We may die. But God has given solutions for that to make that neutralize automatically. The maximum alkali is found in our bones in the form of calcium. So जब हम लोग दूध पीते हैं, तब calcium is eroded from the fixed bank of your bone, and that neutralizes it, and at any given point your blood pH is 7.4 and we are all alive. जो कैल्शियम रहता है उसका क्या होता है? उसका कुछ मैं बता रहा हूँ, उसमें से इसमें है कैल्शियम, इट इज इतना परसेंटेज नहीं है, लेकिन होता है कि उससे ज़्यादा एक्सक्रीट हो रहा है. नाउ आपने जैसे बोला कि उसके अंदर कैल्शियम है, तो फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वी हैव टू सी द वेदर एब्जॉर्प्शन इज देयर और नॉट. टू मेक द एब्जॉर्प्शन केमिकल दिस कैल्शियम इन द ह्यूमन बॉडी, यू रिक्वायर 1:2 रेशियो में मैग्नीशियम इज नेसेसरी. द मैग्नीशियम इज देयर इन द मिल्क इज 1:8 रेशियो. So calcium cannot be absorbed. This is an undisputed fact in the biochemistry. So जो कैल्शियम है वो तो आपका एब्जॉर्ब हो ही नहीं रहा है. आपका कैल्शियम जो ऑलरेडी डिपॉजिटेड है, दैट इज गोइंग डाउन एंड दैट इज कॉजिंग ऑस्टियोपोरोसिस. इसके लिए एक सिंपल आपको बताऊंगा कि इफ यू हैव इन द मॉर्निंग अ ग्लास ऑफ वाटर and have the urine tested, you will find nothing is there in the urine. But if you have a glass of milk and just check it of your urine, you will find the calcium crystals is there. कितने घंटे के बाद? इमीडिएटली करिए ना आप. हाँ, आप सीरम कैल्शियम लेवल आप देख लीजिए, एंड आप थोड़ा सा एक 6 महीने बंद करके आप देखेंगे, इफ यू स्टॉप द मिल्क, your calcium is raised automatically. Second, anemia is one of the very basic problem in the
इंडियन कल्चर, आप घर पे जाइए, आयरन कोई भी लेडीज़ के, सो व्हेन यू टेक दिस मिल्क, द आयरन इज इन वेरी एविडेंस इन द डाइटरी फॉर्म, आप सब्जी रोटी चावल सब में कैल्शियम आपको आ रहा है, बट दैट मेक्स इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स आयरन कैल्शियम। तो कैल्शियम तो वैसे भी आपको मिल नहीं रहा है, आयरन इज ऑल्सो इज गोइंग आउट। You just stop it and just see after 6 months, your hemoglobin level is from 10 to 12, 12 to 14, 12 to 13. My hemoglobin is, as on today, is 16. 16. More than you what you need. Yeah, it's a 16. So it is not like that ki, I'm talking, we are very practically on this point of view. Yeah. हाँ, तो अभी आप कभी चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी एसिडिटी में एक बहुत कल्चर है कि आपको अगर एसिडिटी है तो यू हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क एंड द इट न्यूट्रलाइजेस, इवन इफ यू टेक द ग्लास ऑफ वाटर इट विल न्यूट्रलाइज दैट बिकॉज पीएच इज बोलते हैं ठंडा दूध लो, ये तो मिथ है। I find that sometimes even if you take molten ice cream, Yeah. that also gives you sort of relief. We will definitely will give. We will definitely will give. But what is my point to you? Why not from the root causes? I am with you. Yeah. If you got acidity of any one of your any friends, you just I have for 50 years. you just stop the milk. And just see after 3 months, you will never have a dream in your life that you had acidity. Totally. Totally it will go off. Not even 2-3 spoons of tea. कुछ भी नहीं है। चाय में 2-3 चम्मच भी अभी आ रहा हूँ, सब्जेक्ट पे आ रहा हूँ, समय थोड़ा बहुत कम है, इसलिए मैं अभी थोड़ा टाइम के हिसाब से सब्जेक्ट बहुत है, मैं आ रहा हूँ, आई एम गोइंग ऑन दैट कम्प्लीटली। सो या इसमें से नॉट ओनली दैट, इट कॉजेज अ कैंसर, इट कॉजेज द डायबिटीज, it causes the cardiac problems, the blockages, the lethargic of the human body, because the calcium is going out and getting saturated in all soft tissues. Pain, lethargic है, because your smooth muscle are, आप जब स्ट्रेचन करते हो तो दर्द करती है। छोटे बच्चे they always will be, पापा पैर दर्द कर रहे हैं, छोटे बच्चे आप देखना होगा, you just stop the milk and milk products and they are happy, क्योंकि that's calcium is not there in the legs because this is not stretching. So these are basically facts and well defined in the scientific manner, and for that this is a book I have written in 2006 known as Yes Milk or No Milk. It's a very scientific book to teach in a scientific way in medical fraternity or one person who can understand. Is a very scientific concept. This is being forwarded by Maneka Gandhi, and recently I have been honored by President of India, and this book is included in their library, President Library, and there are the few things, 4 lines, because other subjects I am going to take it, and there are the 4 lines I want you to read it so other people will be hearing. 4 लाइन आप थोड़ा सा पढ़ दीजिए इसमें। Mr. S. Kumar has done a lot of research into the effects of the milk. In his book, Yes Milk, I ask, No Milk. If doctors and influential people in society, like preachers and religious gurus, take the time to read it, they will benefit their own knowledge pools and save thousands of lives rather than destroying them through ignorance. Very simple. Nothing is hiding in this. It's only the ignorance part. Nothing is, because nobody has taught from ages. And this is the one of the concept is myth of, we call it. This is the myth of Indian traditional diet. One of the, it has got very scientific. One can, it will be in the library. You people can have this, or thereafter you can come to my clinic. You can have the in depth, because this requires 8 to 10 hours to talk on this subject. Very, I just superficially I have taken. एक कॉपी लाइब्रेरी को दे दीजिए। जी हाँ, दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ से, बिकॉज सब्जेक्ट इज सो वाइड कि क्योंकि और आपको ये बताना चाहूँगी, जिस देश में milk and milk products are more, there these problems are very prominent, very prominent. Not only this milk has
the more effect, much more dangerous than the brown sugar. Because this has got the 7 opioid peptides. That's why we are all addicted. Small children are addicted. नींद में भी आप, जैसे इन्होंने बताया है कि आप नींद में भी ऐसा देंगे तो बच्चा दूध पी लेगा, आइसक्रीम नहीं. वी आर ऑल एडिक्टेड टू दिस. द रीजन बिहाइंड ऑफ opioid peptides. तो देती रहती है, खाया नहीं है, दूध की बोतल लगा दो. वो देती रहती इसलिए कि वो एडिक्शन है. अब वहाँ प्रिजम्पशन ऐसा बन गया है कि भाई दूध के बिना इज अ कंप्लीट फूड, इसके बिना हो ही नहीं सकता है. And sir, they also say sattvic food. नहीं सात्विक फूड सी कहते हैं सात्विक है वो. नहीं, देखो उनकी कल्पनाएं अपनी जगह बिल्कुल सही है. बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू करेक्ट दिस विद द हेल्प ऑफ साइंस. सी बहुत सालों तक ये चलता रहा पूरे वर्ल्ड में कि पृथ्वी के चक्कर काट रही है, सूर्य काट रहा है या सूर्य इसके पीछे कट रहा है. कितने सालों तक चला. बट देयर वाज ओनली वन पर्सन, कोपेनहेगन, ही सेड, एंड लेटली द पीपल हैव एक्सेप्टेड. अभी भी मेरे लेक्चर्स जब होते हैं कॉलेजेस में, डायटीटिक्स कॉलेज में वगैरह, तो दिस इज सो फार वी हैव बीन सीइंग कि दिस इज अ गुड फॉर द हेल्थ. नाउ हाउ कैन वी से दिस आर रॉन्ग थिंग्स? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट, बट इट्स अ पर्सनल लेवल. यस, वन कैन करेक्ट इट. बिकॉज जब बरसात गिरती है तो आप पूरा छाता नहीं खोल सकते पूरी सिटी के लिए. अपना छाता लेके आप वी कैन प्रोटेक्ट अवर सेल्फ. दूध में हल्दी मिला के पी जाओ. नहीं है, बोल ही रहे ना. लेकिन हमारे जो सेंटर्स बने हुए हैं यहाँ पे हम लोग वी डू इट विद दिस प्रिवेंटिव डाइट. अगर इसने किसी लोगों ने अगर इस पे प्रिवेंटिव करते हैं तो दे आर वेरी ओके. उनको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है. इवन स्किन प्रॉब्लम, एलर्जी प्रॉब्लम, दिस आर ऑल एसोसिएटेड विद दिस. और आई एम वेरी प्रोमिनेंट ऑन दिस कि अगर घर में अगर इसका उपयोग लोग अगर करके देखें ट्रायल पे 6 महीने के लिए, तो आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स विल वैनिश ऑटोमेटिकली. छोटे बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स बहुत होती है, आपने देखा होगा. टिफिन लेके जाते हैं, एज इट इज टिफिन कम्स बैक. द कॉमन कंप्लेंट इन द स्कूल व्हेन आई गो टू द स्कूल बाय लेक्चर, बोले बच्चा जिससे कि वैसे टिफिन लेके आया था खाता ही नहीं है. अब वो इतना बड़ा बड़ा ग्लास दूध का आप देंगे, सो इज 86% इज द वाटर कंटेंट, 16% is the milk solid, out of which only fat is absorbable, other things are not digestible. So that gives a load to the liver, and liver when it is paralyzed, it cannot produce the digestive enzymes, and the appetite is suppressed. ग्रोथ नहीं है, छोटे दुबले पतले देखेंगे आपको. The moment आप दूध बंद कर दिए बच्चों का, so after 3 months they are just after roti. They just ask for the I need something to eat. अदरवाइज जो दूध पीते हैं वो लोग कभी खाना नहीं खाते हैं क्योंकि इसमें बहुत तकलीफ हो जाती है उन लोगों को इसमें से. So this is one of the very important this thing. Second, I am coming to the edible oil, which is again very important fact. हाँ बेटा कुछ पूछा? The same logic as to जैसे कि दूध मतलब गाय का दूध is basically for the गाय का. Yeah, right. Similarly जो हनी हम लोग को मिलती है मधुमक्खी से. हाँ. Is it like then logic ऐसे जाएगा कि honey is basically for मधुमक्खी not for people? The same. नहीं, वो that is a separate issue. यहाँ we are talking on the milk and milk. नहीं, it's a good thing which you said, but that is not being used for their sublings. But milk is used for their sublings. Milk is a species specific. गाय का बछड़े, गाय का दूध गाय के बछड़े के लिए बना हुआ है. वह हम सर गाय का ही दूध क्यों लेते हो फिर? भाई शेर का दूध लो बड़ा. शेर को नहीं बांध सकते, कुछ नहीं कर सकते. जहाँ जहाँ चल रहा है अपने हिसाब से चल रहा है. बट इस वन हैज़ टू थिंक ऑफ दिस इज आई हैव गिवन यू द प्लेटफॉर्म टू थिंक ऑफ. देयर इज वेरियस प्रॉन्स एंड कॉन्स, बट वन हैज़ टू. आप लोग अपने पर्सनल लेवल पे आप करके देखिए. हाँ भाई साहब ने चाय की बात की थी. 2-4 चम्मच. So India is the only country where we are taking with milk. If you go anywhere in the world, you will. नहीं. Everywhere you go, it's only black tea without milk. India is the only country. नहीं, because India is the only country where it is. इसीलिए उस स्टारबक्स में उन्होंने पहले मिल्क नहीं था, बाद में नहीं, हाँ. I'm not joking, but हाँ. मजा नहीं आएगा.
अरे साहब आप एक बार काली चाय पी के तो देखिए Green tea. ना, आप ग्रीन टी लीजिए, उसके बाद में कभी आप दूध की चाय लेके देखेंगे तो आप बोलेंगे नहीं चाहिए यार, जाने दो, ये चीज़ अच्छी है करके आप इसमें, ठीक है चलो. Even egg contains calcium. विच वन? एग. एवरीथिंग हैज गॉट थिंग. थोड़ा सा एक चैप्टर छूट गया था. लेट अस कंसंट्रेट ऑन द काउ. यू सी, कभी गाय को प्रेग्नेंट होने के बाद हैव यू सीन गोइंग टू द गायनेकोलॉजिस्ट? नो, वी हैव नेवर सीन. And he was going or asking, sir, I am pregnant, give me some calcium, iron, nothing is that. So then from where that cow got the calcium? From where she got the everything? Because when Bachu is born, it's fully fleshed, just दौड़ते हुए भागते हुए नजर आएगा आपको. So much of big bone structure. Why? From where they got it? They are getting simply from their food, which is alkaline in nature. And what we are taking, we are just going opposite. Yeah. So here I want to say our body is not designed for the kind of abuse as compared to the diet of any healthy animal living in the wild. The diet which we take today is absolutely abnormal and exotic, driven by the style and economics. But we have to still learn a lot of things from the animal kingdom. They are going absolutely in a nature wise. उनको कहीं कैल्शियम की जरूरत नहीं, आयरन की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं, बस दे आर फुल फ्लैश बाहर होते चले जा रहे हैं. चलिए एक थोड़ा सा चैप्टर टाइम. अच्छा, ऑयल के बारे में आपसे पूछना चाहूँगे कि ये भी बहुत कन्फ्यूज़न है, ऑयल कौन सा लेना. इफ़ यू आस्क टू समवन, आप सोयाबीन बोलेंगे, ये सनफ्लावर बोलेंगे, ये सफोला बोलेंगे, ग्राउंडनट बोलेंगे, तो ऑयल करना तो क्या करना. इफ़ यू गो टू डाइटिशियन, दे विल से चेंज एवरी मंथ, मिक्स इट हाफ एन आवर. व्हाट इज दिस? आपकी एक गाड़ी है, स्कूटर है, व्हीकल है, यू गो टू द स्पेसिफिक शॉप एंड यू गिव द स्पेसिफिक SC40, 2T, 90, gear box का अलग है, इसका अलग है. Then why the human being is not? Because nobody is talking on this subject. So dear friends, the oil which are used in India as on today, the soybean, sunflower, safflower, they are used as a biodiesel in the other countries. They are unfit for human consumption. They are unfit for human consumption. The soybean comes from the Russia, soybean comes from the America, sunflower comes from the Russia, palm oil comes from the Malaysia, and we in India, we are deficient of milk production, the oil production by 70%. We are only 30% self-sufficient. So we have to depend on the any oil which is available in the world coming into the India, and we are just taking to have was what is the definition of a oil in our घर? छौंक दिया, पानी डाला, सब्जी बन गई, तरी बन गई, something like that, oily things, and that is finished. But this is one of the most culprit in the human body. Till 1950s, this oil were used in varnish, the paint industry. और तब तक घी, एनिमल फैट was the only fat available throughout the world, and in India were using ghee. और अभी भी जो पुराने लोग हम बोलते भाई इतना घी खाते तो कैसे अच्छे रहते, तो अभी क्यों नहीं, अभी ऑल ऑफ ए सडन क्यों एक खराब हो गया. तो उसके पीछे अगेन इज गोज वेरी बिग मिथ है, बिकॉज देयर वर सम फार्मास्यूटिकल कंपनी वांटेड टू इंट्रोड्यूस anti-cholesterol tablets in the market, and similarly time the chemistry was in a progressing stage, so resins came into existence and resins took over the all paint industry. अब इतनी बड़ी चीज़ अब करेंगे क्या लोगों ने. सोयाबीन आपको 1970 के दशक में भारत में आया, लोगों को सोयाबीन नहीं मालूम था, बट इन द वर्ल्ड 200 साल पुरानी इंडस्ट्रीज़ हैं.
पूरे वर्ल्ड में। उन्होंने उसको बाइफर्गेट कर दिया कि इफ यू टेक घी इट इंक्रीजेज योर कोलेस्ट्रॉल, एंड कोलेस्ट्रॉल इज अगेन वेरी बिग मिथ, वेरी बिग मिथ। जिन लोगों के बाईपास होते हैं 80%, I would say 90% people having a normal cholesterol level and they are going for bypass and angioplasty. So it is a myth, absolutely myth. They made a बहुत बड़ा ब्लंडर है वो। तो 1950 के दशक के बाद में they came into the existing, एक स्टडी पब्लिश हुई कि हाई प्यूफा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स लोअर्स द कोलेस्ट्रॉल लेवल, और वो एक स्टडी को बना के इन्होंने पूरे वर्ल्ड में उसको डोमिनेट किया और एवरीबडी स्टार्टेड ऑयल एज ए लाइक। बट इन 1950 1960s के बाद में इफ यू जस्ट सी द ग्राफ ऑफ एवरीथिंग इज गोइंग अप एंड अप एंड अप। डायबिटीज शायद ही हम लोगों ने कभी सुना, कैंसर वी आर नॉट सीन इन दोज डेज, लेकिन अभी इट इज इंक्रीजिंग बाय डे एंड डे, इसमें से बहुत गोइंग, और हमको विकल्प नहीं मिल रहा है फर्स्ट लाइन अब, बिकॉज द रूट जो कारण है दैट इज कमिंग फ्रॉम योर किचन। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम द किचन एंड योर सॉल्यूशंस रिमेन्स इन द किचन बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग द ऑयल विच वी शुड यूज इट। अभी आपने देखा होगा ऑयल पेंटिंग्स पुराने, यू जस्ट पुट इट आउट, ब्रश आपका सूख जाता है, so that is highly unsaturated, that comes in a contact with the oil, this molecule, and it's dried up. और वही ऑयल जब हमारे शरीर में जा रहा है तो what is doing, the fact is there is same things happening. But if you have the ghee, you keep for 100 years, that will remain as it is. आप just उंगली आप डालिए और it will be as it is because it is a saturated fats. It will never get spoiled. So the वेजिटेबल ऑयल्स विच आर इज अ मिथ, थोड़ा सा एक दो कैसेट में दिखाने चाहता हूँ, उसके बाद में आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग व्हाट एक्चुअली इज ऑयल। या अभी कंपैरिजन में आता है तो आई विल शो टू हियर दैट, यू विल गेट आंसर फॉर दैट। ऐसा स्लो पॉइजन जो हर रोज आपको मौत के करीब ले जा रहा है। ये खुलासा किया है दिल्ली की एक संस्था CAC यानी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने। देश के 30 बड़े तेल ब्रांड्स को CAC ने अपने लैब में टेस्ट किया और जो नतीजा निकला वो बेहद चौंकाने वाला था। CAC के मुताबिक आप जिस तेल का इस्तेमाल करती हैं उसमें मिला हुआ है ऐसा प्रतिबंधित ट्रांस फैट जो सेहतमंद इंसान को भी दे सकता है हार्ट अटैक, कैंसर, डायबिटीज और अल्जाइमर जैसी खतरनाक बीमारियां। जरा सोचिए, आप जिस तेल का इस्तेमाल करती हैं वो तेल हर पल आपको ले जाता है खतरनाक बीमारी के पास। आज हम आपको बताएंगे क्या है ट्रांस फैट का सच। हाँ, लेक्चर में हूँ मैं। पूरी तरह से बैन है ये ट्रांस फैट। हम ये भी बताएंगे कि कितना घातक है ये ट्रांस फैट। 1 घंटा है, ठीक है। और कैसे बचे कुछ अर्जेंट, सबसे बड़े दुश्मन। कुछ अर्जेंट है, अर्जेंट है क्या? ठीक ठीक। किचन में जाने से डरेंगे, खबर ही ऐसी है। आज आप खाना बनाने से पहले जरूर सोचेंगे कि आखिर किस तेल का इस्तेमाल करें। ये खबर आज देश की हर माँ देखेगी। ये खबर हर पत्नी के लिए देखना जरूरी है। ये खबर देखने के बाद आप ये जरूर सोचेंगी कि आज खाना क्या बनाएं, आज किचन में किस तेल का इस्तेमाल करें। तो आज का खाना बनाने से पहले ये खबर जरूर देखिए क्योंकि सवाल आपके परिवार की सेहत का है। आप अपने किचन में जिस तेल का इस्तेमाल करती हैं वो आपको दे रहा है खतरनाक बीमारियां। उस तेल में है ट्रांस फैट जो इतना खतरनाक है
ट्रांसफैट पूरी दुनिया में बैन है, जिस ट्रांसफैट को अमेरिका ने भी बैन कर रखा है और जिसके लिए डेनमार्क ने 2% का अंतरराष्ट्रीय मानक तय कर रखा है, उसकी मात्रा हमारे देश में 5 से 12 गुना ज्यादा है। ये मात्रा WHO के मानक से भी ज्यादा है, यानी अपने देश में खतरा सबसे ज्यादा है। हमारी कोशिश तो पता करने की कि क्या हमारी वनस्पति में ट्रांसफैट है कि नहीं है। अध्ययन से बिल्कुल स्पष्ट निकल के आया कि हाँ है, और डेनमार्क का जो मानक है 2%, उससे बहुत गुना ज्यादा है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट निकल के आया कि आज वनस्पति में ट्रांसफैट है, और दूसरा उसके लिए कोई मानक नहीं है। तीसरी चीज जो निकल के आती है कि सरकार ने पहल करी मानक बनाने की, उसकी अपनी जो सब कमेटी है उसने कहा कि मानक बनाने चाहिए। हेलो। मानक बनाने की जी। कोशिश भी हुई, मगर बोलिए। सरकार का जो तरीका रहता है, हाँ, बोलिए। और मैं समझती हूँ कंपनियों का दबाव रहता है कि जहाँ स्वास्थ्य का मामला आता है सरकार पीछे हट जाती है, और सरकार ने मानक नहीं बनाए। मैडम आज नहीं मुलाकात होगी आपकी, बताते हैं कि CSE की रिपोर्ट के आज मुताबिक एक लेक्चर है तो उसमें है हम लोग, तो मुलाकात नहीं हो पाएगी आपकी, वेडनेसडे को मिलेंगे आपको। सबसे ज्यादा ट्रांसफैट पाया गया है वो है फन। नहीं होते हैं हम लोग, बट आज कुछ की मात्रा 23.7 है। नहीं, यानी स्टैंडर्ड से 12 नहीं आज मेरा कहीं लेक्चर है, इसलिए हम अवेलेबल नहीं है वहाँ पे। जनरली हम लोग अवेलेबल होते हैं, आज नहीं है। ट्रांसफैट है 15%। CSE के मुताबिक तीसरे नंबर पर है रत वनस्पति, जिसमें ट्रांसफैट की मात्रा 15.9% है। गगन वनस्पति में ट्रांसफैट की मात्रा 14.83% है, जबकि चिंतन वनस्पति में 13.76% और जेमिनी में 12.72% ट्रांसफैट पाया गया। डालडा ब्रांड में 9.4% ट्रांसफैट पाया गया। मिल्क फूड में 5.3, फूल बटर में 3.7% ट्रांसफैट की मात्रा पाई गई। यानी CSE की रिपोर्ट के मुताबिक ये वो ब्रांड्स हैं जिनमें 5 से 12 गुना ज्यादा ट्रांसफैट है। सरकार ने लेकिन भारत में इस जानलेवा ट्रांसफैट को रोकने के लिए कोई भी कानून नहीं है। अनस्टेबल एंजाइना या हार्ट अटैक का सबसे इम्पोर्टेंट रीजन होता है दिल की नस में सूजन आ जाना, और ट्रांस फैटी एसिड्स एक अहम कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर। US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक ट्रांसफैट शरीर में जानलेवा बैड कोलेस्ट्रॉल। That's the first step, like going at the next step of banning and all that. It's going to take time and it's going to take a lot of awareness also, and it's going to be working with the industry. We have to work with the industry along, and of course the public, the demand created and the supply, all that. That logistics has to be taken. But trans fats is a danger to the health of India. So, ladies and gentlemen, I have shown you the simple, which is government also knows that, कि there's nothing is good thing is available. Is our health minister, we agreed कि India doesn't have and had to have a lot of problems. Then they must ban it. They cannot ban it. They cannot ban it. Because we are 30%, we are self-sufficient, 70% is imported. If we don't bring this oil into India, nobody will be there on the top chair. They will go off. Even trans fat कम भी है. हाँ. When you boil it, हाँ. तो trans fat automatically आ जाता है. आ जाता है। तो अभी उसी के ऊपर मैं थोड़ा सा, आपने जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस किए थे उसके आंसर्स अभी आपको इसमें आंसर्स मिलेंगे इसमें से। सो दैट वी हैव गॉट वन foundation known as the Alpha Cardio Obesity Heart and Diabetic Foundation, which is dedicated to the non-pharmacological concepts completely. This is the scenario of India. If you see the cancers is 17% and cardiovascular disease is 28%. It is the biggest killer in India. All other things are very in a nominal positions completely. There is one oil
which is being manufactured in India for last 50 years. And last 20 years, India is exporting, and India is second largest exporter in the world after China, which is a brand, is one of the brand is Alpha Cardio, but this is commonly known as a bran oil. Rice bran oil, which is very widely, now it is very popular, but we have been working on this oil for last 10 years. This brand is available, the most trusted by the doctors. It is being sold in medical shops, basically. And this is with well certified from the all prime institution of India, the National Institute of Nutrition, Hyderabad, Mysore, New Delhi. You will see this is basically the data-based research are there. The frying takes the less time saving cooking as frying absorbs the 20% less oil. While most of the oil, as I said, is imported and which are used as a biodiesel in their countries. They are unfit for human consumption, and as far as the health ground is concerned, Now this is the situation of India as on today. You see that India is number 1 killer by 2015. 1 in 4 Indian will die of the heart attack. 60 million is affected. 200 million at the risk of next decade. Risk of women is 200%. 10% patients are under 30 years. No previous symptoms in 50% deaths. बहुत बार ऐसा होता है कि we are in शाम तक साथ में रहते हैं, सुबह घंटी बजती भाई is gone for the heart attacks. So this is the 50%. This uncertainty is there. So oil is one of the culprit in that. So your heart is under attack. Prevent, preserve and protect your precious heart by heart-friendly cooking oil. This is again is very important. We all are standing on this page, you may say. The ignoring knowledge of edible oil can be dangerous to your heart and total health. Understand the real facts of the kitchen oil. कभी भी ऑयल के बारे में अगर कहीं चर्चा चल रही है तो बहुत सारे लोग हम लोग नेगलेक्ट करते हैं. कहीं पेपर में आता है तो वी नेगलेक्ट इट. ये जनरली हो रहा है कि वी जस्ट सी कि क्या है, खाने पीने का तो तेल है, फ्राइंग हो गया, बस नॉट लाइक दैट. इट्स अ वेरी साइंटिफिक प्रोडक्ट. दिस चैप्टर इज हार्डली एवर सीन. वी नो ओनली बाय name. Desi ghee, vanaspati ghee, mustard, cotton seed, sunflower, soybean, palm oil. Name are known to everyone. But molecular structure is unknown to a common man. उसको मालूम ही नहीं है, उसको सिर्फ ऑयल दिख रहा है कि सब एक जैसे ऑयल है. बट ऑयल what exactly is? It is basically is a combination of 2 fatty acids known as a saturated and unsaturated. The unsaturated is divided in MUFA and PUFA. This is monounsaturated fatty acid and polyunsaturated fatty acid and saturated fatty acid. This is a combination of 3. 2 unsaturated divided in 2, mono and poly. Now you have to understand very simple thing. Saturated means all the bonds are saturated with the hydrogen. So there is no place for the oxidation. इसलिए घी हमेशा 100 साल के बाद भी आप देखेंगे तो गीला रहता है, कुछ नहीं होता है. But it is if unsaturated, oxygen is taken from the atmosphere and they dried up very fast. So there is a mono means single bond. Means अगर आज एक लोहे के टुकड़े को आप नीचे फेंक दीजिए, it will not get broken. But polyunsaturated fatty acids is that अगर आप कांच के इसको नीचे फेंक दिए तो छोटे छोटे आपके टुकड़े निकल जाएंगे. दैट इज पॉली. एक से ज़्यादा बॉन्ड्स हैं, दैट इज अ पॉली. जैसे कांच आपका शरीर को लगेगा तो दैट विल क्रिएट ए न्यूसेंस इन द ह्यूमन बॉडी. सिमिलरली दिस ब्रेक्स डाउन एंड आर बेसिकली क्रिएटिंग द ह्यूमन प्रॉब्लम्स. नाउ पॉलीअनसैचुरेटेड फैटीज आर बेसिकली इज इम्यूनोसप्रेसेंट. इससे इम्यूनिटी आपकी खराब हो रही है. देन इट प्रोड्यूसेस द फ्री रेडिकल which is responsible for your aging process, atherosclerosis or even carcinogenesis. They are causing a cancer because the free radicals which is responsible for that and is creating a cancer. अभी अगर कोई बोलेगा सोयाबीन is a cancer तो लोग परेशान हो जाएंगे. But it's true. You cannot just change it that. So which oil one has to take? So
World Health Organization and American Heart Association has given one guideline कि any oil is good provided saturated fatty acid should be around 28.6, MUFA should be more than 42.8 and PUFA should be less than 28.6. इस कैटेगरी में अगर कोई ऑयल बैठता है so there is somewhere is better as compared to the all other oil. तो yeah, I'm coming to the point where. So you see olive oil is 77 and 9. This is the best oil available in the world. जहाँ पे olive oil खाया जाता है वहाँ पे there's hardly any chances of cardiac problems, cancers, diabetes, which is used in a भूमध्य रेखा जो है पूरे वर्ल्ड की वहाँ पे खाया जाता है. It is the best, but not in India. Not in India. It is not good for the Indian people. The reason I am coming, there are 6-7 factors which makes the ideal oil for the consumption. So this is one of the parameter. तो इंडिया में आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा यूज होता है safflower. That is safflower. Safflower is curdy, safola. This is 75. Sunflower is 67. Soybean is 60. ये कम होना चाहिए. So it is in upper side. ये ज़्यादा होना चाहिए तो ये कम है. So this makes this oil unsuitable for the human consumption because polyunsaturated, as I said, is an immunosuppressant. आपका free radicals produce हुए, which is causing aging process, orthochlorosis, even and the carcinogenesis. Now, second, why the people have thought it is good? देखिए safflower में this omega 6 is 77.1 and reduces the cholesterol by -16. ये इसलिए जो 1952 में एक स्टडी पब्लिश हुई थी उसमें हाई प्यूफा मीन्स दिस लोअर्स द कोलेस्ट्रॉल. तो इसलिए उसको वो लोगों ने उस समय इस्तेमाल करना चालू किया. नाउ घी जो है जैसे मैंने बोला अच्छा है, उसमें एक लेकुना है. दिस इंक्रीजेस द एसडीएल एंड एलडीएल बोथ. एनी घी दिस कॉम्पोजिशन विल रिमेन्स ऑफ ब्यूट्रिक एसिड इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट. तो जब घी का एक नेगेटिव पॉइंट है कि दिस इंक्रीजेस द एसडीएल एंड एलडीएल बोथ. लेकिन उस जमाने में लोग पैदल चलते थे, साइकिल से जाते थे, स्कूल जाना हो. हाई डाइटरी फाइबर दे यूज्ड टू टेक, सो एलडीएल यूज्ड टू कम डाउन. बट आज के डेट में अगर घी खाना है तो थोड़ा सा आपको पैदल चलना है, हाई डाइटरी फाइबर. अभी तो पोजीशन चेंज हो गई है. एचडीएल वैसे भी विदाउट एक्सरसाइज बढ़ता ही नहीं बढ़ता है. तो बाकी तो एनीबडी क्लेम्स ये खाने से एचडीएल बढ़ता है, दैट इज नंबर. हाँ, तो उसके लिए अभी एक विकल्प आपको मैं बताता हूँ विच इज़ वेरी साइंटिफिकली प्रूवन. तो आज के ज़माने में क्या सेल्फ स्टार्ट, नीचे उतरो, लिफ्ट है. सो अभी अगर घी खाना है तो अच्छा है, लेकिन आपको थोड़ा सा इसमें जाना पड़ेगा. सेकेंड, दिस ऑयल राइस ब्राउन ऑयल हैज़ गॉट वन थिंग. तो सोयाबीन, सनफ्लावर, सफोला क्या करता है? टोटल कोलेस्ट्रॉल कम कर, एचडीएल एलडीएल दोनों कम कर देता है. वॉट आवर बॉडी रिक्वायर्स, एचडीएल बढ़ना चाहिए, एलडीएल कम होना चाहिए. सो दिस हैज़ गॉट वन गामा ओरिजिनल इंस्टेड ऑफ फेरुलिक एसिड. Japanese isolated gamma original in 1943 using as a medicine since 1962. This increases the SDL, reduces the LTL along with the triglycerides without taking any statin tablets. अगर आप कोलेस्ट्रॉल आपका, आप लिपिड प्रोफाइल ले लीजिए, ये ऑयल यूज़ करिए 90 डेज, एंड यू विल फाइंड SDL हैज़ इंक्रीज, LDL इज कमिंग ऑन. बिकॉज जो उसके अंदर जो ब्राउन कलर का जो रहता है उसके अंदर दिस गामा ओरिजिनल इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट विच इज नॉट फाउंड इन एनी ऑफ द ऑयल. इज बाय विर्च्यू ऑफ गॉड दिस ऑयल हैज गॉट गामा ओरिजिनल कंप्लीटली. इसके अलावा इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं. contributes an additional cholesterol lowering benefits by increasing conversion of cholesterol to the bile acid. It increases the bile acid excretion. It is a potent antioxidant, protects against heart disease. It impairs the cholesterol absorption in the digestive system. It improves the liver function. Gastrointestinal complaints, peptic ulcer, gastritis, irritable bowel syndrome, non-specific gastrointestinal complaints by normalization of nervous system.
So this has different other actions also, which is by virtue of nature God has gifted that. Then second, it has got a sequelain. One of the Japanese scientists has discovered in 1906. This is anti-wrinkle properties. No need to take any other treatments to prevent wrinkles, because आप देखना Chinese or Japanese ladies, even at the age of 90, they do not have the wrinkles. This is one of the reasons, because they are using this oil from ages. तो उनमें आपको कभी भी wrinkles समझ में नहीं आएंगे. So this is again second point, which is naturally found at no cost. Third is very important of coming to this is a sorry, the 254 degrees centigrade. This is a smoke point, which is very important, because we have got a system of a deep frying. बराबर. तो कोई भी ऑयल एक ऐसा होना चाहिए जिसमें गर्म करने के बाद में उसमें फ्यूम नहीं आना चाहिए. अगर फ्यूम आता है, so this gets, as rightly you said, gets converted into the trans fatty acids. So this is what it is. The cis configuration and the trans configuration. The cis configuration में जितने भी ऑयल जब तक गर्म नहीं करते हैं, till that they are in cis configuration. The cis configuration जो है, body can accept, prevents the tight packing of fatty acids in cellular membrane. Every oil has got a different type of smoke point. Because Yeah. अगर हम तले कुछ, जी हाँ, जी हाँ, हाँ. तो वो जो टेम्परेचर है वो कोई भी ऑयल में इतना ऊपर जाता है कि ट्रांसपोर्ट ऑटोमेटिकली आता है. होता है, लेकिन हर ऑयल के अलग अलग स्मोक पॉइंट है. Yeah, that's true. तो अगर ये जो ऑयल है, you will never find a smoke point fume. Asking at what temperature? It is basically one should be around 250 के ऊपर होना चाहिए almost. 250 के ऊपर होना चाहिए. हाँ, अदरवाइज नीचे रहेगा तो आपका धुआं आया तो समझ जाइए कि ट्रांस फैट आ गया किसी भी तेल में. क्योंकि उसमें भी क्या हो जाता है, वाली आपकी कढ़ाई है. जी हाँ, तो कढ़ाई के इसमें कोई ऑयल में वो लेयर आ जाता है. जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ. And वो लेयर अगर स्टिकअप है, हाँ. तो टेम्परेचर डिफरेंस आता है इन बिटवीन. बिल्कुल 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 आता है. इससे भी अफेक्ट होगा. बिल्कुल अफेक्ट होगा, बिल्कुल अफेक्ट होगा. तो उसके लिए इसलिए बोलते हैं एक बार गर्म करने के बाद फिर से नहीं यूज करना है. How to find out that आपने जो टेम्परेचर कहा, हाँ, ये हर ऑयल के स्पेसिफिक है. हाँ, सबके स्पेसिफिक है पैरामीटर्स. या इट इज. अभी व्हाट इज अ सिस, यू हैव टू अंडरस्टैंड. दिस इज अ कार्बन मॉलिक्यूल ऑफ द वन साइड ऑफ द डबल बॉन्ड 1 2 3 4. दिस इज अ सिस कॉन्फ़िगरेशन. द मोमेंट इट गेट्स इन द ट्रांस, दिस मॉलिक्यूल कम्स फ्रॉम हियर टू C1 C2 C3, that goes for the opposite side is a mirror image, and a left hand का glow है, right hand में नहीं पहन सकते, is a mirror image which is a trans fatty acids. Is this basically, and trans fatty acids, soybean, sunflower, sulfur oil and other oil having the low smoke point are full of trans fatty acids, causing health hazards like cardiovascular problem, diabetes, cancer, arthritis, aging, endothelium dysfunction, obesity due to reduced cellular membrane fluidity, because this body has got this cell which counts more than 100 trillion cells, and if either activity is blocked by this trans fatty acid, this makes the plastic shit on that and all activity is paralyzed, which is causing a death of the cell and that causing a secondary problems in the human being. अभी एक बात देखिए, जैसे पानी अगर ऊपर से नीचे गिरता है, ज़मीन है, अंदर जा रहा है, इट्स अ बेसिकली सिस. द मोमेंट आप डामर का रोड या सीमेंट रोड है, दैट इज़ अ ट्रांस. वाटर इज़ नॉट गोइंग इनसाइड. सो दिस इज़ हैपनिंग विथ आवर सेल्स. आप बिलीव नहीं करेंगे, वी आर जस्ट चेंजिंग द ऑयल ऑफ दिस अल्फा कार्डी, वी आर जस्ट ट्रीटिंग द डायबिटिक पेशेंट्स. सिर्फ चेंजिंग दिस, डायबिटीज is cured, because most of the time the sugar is not getting into the system, it is accumulated in the blood. Now one more factor is omega 6 to omega 3. Now this is very important factor, is हमेशा confusion में है, what is omega 6, what is omega 3, layman is not understood, क्या है मालूम नहीं. I will explain here very fundamentally. This is the polyunsaturated fatty acids are only two, that is linoleic acid and alpha linolenic acid.
monosaturated fatty acid, there are only two. One is oleic acid and uric acid. They are the two. And saturated fatty acids, there are 34 saturated fatty acids. So these are the list of that. And PUFA is only 2. Now ideally it should be 1:1. किसी भी ऑयल में 1:1 होना चाहिए, बट omega 3 is missing in most